Early morning at the Karachi harbour. As the trawlers return with their catch, the docks begin to stir. And it's business as usual. For 9-year-old Rozina, it's the start of another long day. She lives in Machar colony, a slum located close to the harbour. Most of the people here earn a living from the sea. Many are fishermen, others work at the docks. Some, like Rozina, clean shrimp at one of the many private factories in the area. Preparing the catch for the market earns Rozina a few precious rupees each day. Back home, her mother is busy with another kind of preparation, one that will transform Rozina from a factory worker into the little girl she's meant to be. मुझसे अच्छा हुए उनका जिंदगी क्योंकि मेरा तो हाल खराब है हमें तो नहीं पता क्या है पढ़ाई क्या चीज़ है अभी जब देखती हूँ दूसरा बच्चा को तो इसलिए हम बोलते हैं नहीं मेरा बेटी मुझसे अच्छी हो मेरे जैसा नहीं बने. As Rozina makes her way through the colony, more children wearing the same uniform emerge from the warren of streets, all heading in the same direction. Their destination, Machar 1, the Citizens Foundation school nearby, standing where there used to be a cattle pen. Exercise number 2. 1, 2, 3, 4. वो पढ़ाई अच्छी लगती है मुझे उर्दू की किताब भी अच्छी लगती है और मैडम भी मुझसे प्यार करती है मैडम को भी अच्छी लगती है मुझे मिस को भी अच्छी लगती है. Winter, spring, summer, autumn, winter. अगर टीचर स्कूल नहीं होता मैं झींगे भी छिलती और पढ़ाई मस्जिद में जाती मदरसे में जाती और अगर झींगे नहीं आती तो सीजर तब बैठी रहती घर पे. This school is the opening chapter of a remarkable story that began in 1995 with a conversation amongst a group of Karachi-based businessmen. We shared one thing in common, which was that we were all fed up with the state of affairs in the country. We one day decided that we will either be a part of the problem and just sit back and enjoy ourselves, or get together and do something to change the situation. So they set up the Citizens Foundation to provide quality education at subsidised rates. Machar 1 was among the first batch of TCF schools. Today there are 180 TCF primary and secondary school units, educating more than 22,000 children in deprived areas across Pakistan. Each year, more schools are coming up. We have a very simple mission to start with, which is to pick children from the streets and put them into schools. The vision is that these children should be able to compete with children of more privileged people and be very effective members of the society. The streets of Machar colony were the right place to start. People here live on the edge of subsistence, along a sewer where breed the mosquitoes that give the area its name. Rozina's family occupies 2 rooms in a communal dwelling. Her father is unemployed and her mother, with Rozina's help, makes ends meet by cleaning shrimp. But she plans to send her younger daughters to the TCF despite her husband's opposition. ये तो लड़ना पड़ता है वो बोलता है नहीं पढ़ाओ मैं बोलती हूँ पढ़ाना है मुझे बच्चा को ये कहता है पढ़ाना नहीं है कहाँ से देगी घर नहीं चला सकती है पैसा कहाँ से देगी. But Nilo can send her daughters to school because of TCF's adjustable fee structure.
फ़ीस डिसाइड करने का तरीक़ाकार ये है कि हम कम्युनिटी में जाते हैं और हर बच्चे के घर पे जाके उनके पेरेंट्स से हम इंटरव्यू मैं लेती हूँ, उस हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं कि इनकी इतनी फ़ीस होनी चाहिए। To foster a sense of participation in their education, all TCF students pay a token fee, which can be as little as 10 rupees a month. Rozina's family has to pay only 40 rupees a month. But she's lucky. Almost half of primary school-aged children in Pakistan will never see the inside of a classroom, the lowest enrolment rate in South Asia. Of those that do, 50% are likely to be primary school dropouts. Little wonder then that a vast majority of Pakistan's population is illiterate. There are two things that need to be done. One is massive investment in education and literacy, and second, to create awareness in the public at large. There is mismanagement, there is lack of good governance, and people have been able to get away too long with sort of apathy in terms of administration of education. For those who can afford it, there are expensive private schools that offer facilities and education comparable to that in the West. But for most Pakistani children, such an education is out of reach. Their options are limited to madrasas or substandard private and government schools. Down the road from TCF's Machar colony school is the local government school. ये ऐसा है कि आप ये जो पानी देख रहे हो ये बाहर का पानी है और ये हमारे यहाँ पर बाथरूम्स बने हुए हैं जिस पे बच्चों को इनके ऊपर से चढ़ के जाना पड़ता है। ये जो हमारे पास है ये दूसरी क्लास है, इसके टीचर्स को अभी पेट में दर्द होगा तो गए हुए हैं ना दवाई वगैरह लेने के लिए, और इसके भी यही हालत है कि ये बच्चे जो हैं वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर तो पंखा तक भी हमारे पास नहीं है। बहरहाल डिस्टर्ब तो हैं हम, लेकिन क्या करें कि हमारे पास जगह नहीं है, जगह की बड़ी तंगी है, इस वजह से हमें जो है एक कमरे में दो क्लासें बिठानी पड़ती हैं। ये हमारे पास दो क्लासें इस वक्त बैठी हुई हैं, एक फर्स्ट क्लास है और एक थर्ड क्लास है। ये बीच वाले जो बच्चे बैठे हुए हैं ये थर्ड क्लास में हैं, ये जो नीचे बच्चे बैठे हुए हैं ये फर्स्ट क्लास के हैं, ये भी फर्स्ट क्लास की बच्चियाँ सारी बैठी हुई हैं। अब दो क्लासों को हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते, एक क्लास थोड़ी देर जो है वो खामोश हो जाती है ताकि हम दूसरे को पढ़ा दें, उसके बाद हम उस क्लास को पढ़ाते हैं। और ख़ास करके हमारे पास यहाँ पे जो छोटी क्लास है इनको तो पढ़ाना तवज्जो के लिए बड़ा मसला होता है। It's another world at TCF schools. No cramped classrooms or shortage of teachers here. Each primary school has 6 classrooms, a well-stocked library, an art room where children put recycled material to creative use, a canteen run by a woman from the local community, and toilets with running water. Secondary schools also have well-equipped science and computer labs. मैंने TCF स्कूल में आने से पहले कंप्यूटर नहीं सीखा था और अब यहाँ आकर मैंने MS ऑफिस 8 क्लास में सीखा और यहाँ पे आके GW बेसिक सीख रहा हूँ। One way in which our system of education is different is that we have a very huge emphasis on quality. Secondly, we have actually tried to pick up the national curriculum and made some value addition in the curriculum itself. For example, we start with the English language on day 1, although bulk of our teaching is in Urdu. Now, how will we make an interrogative sentence out of this? Does Sana decorate the room? Very. In fact, TCF schools offer the kind of education and facilities found only at elite private institutes in the country. In rural areas, the need for such schools is even more urgent. The Artal Government School, a few miles from Larkana. This is what's commonly known as a ghost school. No child has ever studied here. In the corridors hangs a foul stench and filth litters the floor. 10 बरस गुजरने के बाद इसकी लागत जो आई है 3 मिलियन उसी टाइम आई थी। अब तक ये नहीं खुल सका है, जिसकी हालत आप देख सकते हैं कि सवाए पूरे गांव के लेटन गंद कचरे के अलावा कुछ नहीं है। आप समझेंगे कि ये जो है कोई जानवरों का ठिकाना है,
इंसानों के पढ़ाई का और तदरीसी अमल का तो है ही कुछ नहीं। This place is no exception. Thousands more such schools lie closed, crumbling to dust. Some are used as barns by the villagers. Some have been taken over as private residences. Others are used as recreation spots by the local youth. All this while the children here are deprived of a future. In Sindh alone there are at least 5,000 such ghost schools. Local authorities say this is mainly because of political interference in staff postings. जो टीचर्स जो अपॉइंट किए हैं वो दूर दराज इलाकों से किया। उनको 2 घंटे लगते हैं अपने घर से उस स्कूल तक पहुंचना। सर फॉर टाइम बिंग तो जाती हैं, मगर लॉन्ग रन में वो फिर नहीं जाती है, इससे फिर वो स्कूल बंद हो जाते हैं। Studying at a functioning school is no guarantee of a good education either. According to a recent UNICEF report, only 7% of Pakistani children who complete primary education are literate to an expected level of competency. Mohsin was at a government school in rural Punjab when a TCF school opened in a nearby village. He was eager to join. His own school hardly offered an ideal environment for education. सब मारते बहुत थे, 9 बजे आते थे, 12 बजे चले जाते थे और बच्चे कभी चोरी कर लेते थे, कभी किसी की कॉपी फाड़ देते थे, कभी किसी की पेंसिल उठा लेते थे, कभी किसी का शॉप उठा लेते थे। Although a student of class 4, Mohsin was taken into KG level at TCF. मुझे आता नहीं था कुछ भी और वहाँ इंग्लिश भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं वहाँ लिखनी आती थी, पढ़नी भी नहीं आती थी। यहाँ आए तो फिर हमें इंग्लिश भी आती है पढ़नी, उर्दू भी पढ़नी लिखनी भी आती है। Now Mohsin's in class 3. Getting to school and back isn't easy, but at least he no longer has to travel alone. As awareness of the TCF school has grown in the area, several other children from his village have started making the journey with him every day. Quality education is no accident. To ensure it, TCF has a centre in Karachi where teachers and principals receive pre-service training and refresher courses. हम सवाल कर रहे हैं तो उसमें हम बच्चे को चेक करने के साथ साथ टीचर खुद अपने आप को भी चेक करती है, अपने एबिलिटीज़ को, अपनी सलाहियतों को भी चेक करती है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जिन एरियाज़ में रह रहे हैं वहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो बच्चा इवन के बच्चे को अपने घर से भी कोई हेल्प नहीं मिल पाती है, तो बच्चा जो है वो टोटली डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारी टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएंगी तो हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हमारे हेड ऑफिस से भी सरप्राइज़ विजिट होते हैं और हम जाके बाकायदा देखते हैं कि हमारी टीचर्स उस ट्रेनिंग को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। देखा है आपने गुलाब के फूल को, कलर में भी डिफरेंट है लेकिन पत्तियाँ भी उसकी। ये TCF के स्कूल जो हैं एक प्लानिंग के तहत चल रहे हैं। हम विदाउट टीचिंग एड्स के नहीं जाते क्लास में, हम बग़ैर लेसन प्लान के नहीं जाते। ये चीज़ें हमारे हैंडओवर होती हैं, हमारी डेली डायरीज़ होती हैं। हमने जो दिन भर काम करवाया हमारी डेली डायरी में मेंशन होता है। To encourage girls' enrolment, TCF employs only women as principals and teachers. हमारे स्कूल्स जो हैं वो जिन आबादियों में हैं वहाँ लड़कियों को पढ़ाने का रुझान नहीं है। वो लड़कियाँ जब हमारे स्कूलों में आती हैं और एहसास तहफ़्फ़ुज़ उनको मिलता है तो वालिदैन खुशी खुशी स्कूलों में अपनी बच्चियों को भी भेजते हैं। वहाँ लड़के जो है वो ख़वातीन का एहतराम भी सीखते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो बिहेव करते हैं लड़कियों के साथ भी। Here, girls learn that they too can have choices. मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, मुझे बड़े होकर टीचर बनना है, मैं बड़ी होकर पायलट बनूंगी। TCF offers children like these a chance to overcome the disadvantages they were born with. But there's a cost to pay, and that's where the donors come in. TCF is a people's project. There are no government money in this. It is funded by the people. It belongs to the people. Pakistani corporations, Pakistani donors, Pakistani diaspora, they're all joining in. They're making this into a movement that they're all walking on the same street with a flag saying, educate Pakistan. We have people outside Pakistan who are putting chapters together and they're mobilizing the Pakistani diaspora. A lot of very committed local volunteers as well go out
and organize events for us to eventually get the money to the children and take this whole mission forward. The Kawasji Family Trust donated funds for one of TCF's largest campuses. This is the first priority, education and health. Health you help after the fellow is sick. But if you educate a man, chances of his living a better life and looking after his mind and body and not getting sick. Everything is education. Corporate donors lend long-term support to the schools. We have to make our contribution to the society. We see the people of TCF, the directors of TCF, they are successful people in their fields. They are contributing their resource, which is valuable time. So we have to contribute our resource, the other resource which is required, which is the funds. But TCF doesn't just have big business behind it. Many a private individual has been inspired by its work. TCF को इसलिए डोनेट करते हैं क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ तालीम से है, ख़ास करके लड़कियों की तालीम से। हमारे मुल्क में लड़कियों को ज़्यादा तालीम देने के अंदर रिवाज ही नहीं है और वैसे भी मुल्क में तालीम की बहुत कमी है। If it weren't for donors, children like Iram wouldn't be getting an education. Iram's father died 4 years ago. Her mother works as a field hand to support her 6 children. मैं ऐसे तो नहीं थी जैसी मैं अब हो गई। मुझे फिक्र में पता जब इतनी कोई मजबूरी आवे तो कोई किसी से कहने जोगा नहीं है, कोई किसी की बात नहीं सुनता। When the roof of their house collapsed on top of the children last month, Allah Rakhi had to borrow money to get their injuries treated. But 4 of her children study in a nearby TCF school and also receive textbooks and uniforms for free. 7-year-old Iram has big plans for the future. मुझे पुलिस में जाना, मुझे पुलिस की नौकरी बहुत अच्छी लगती है। वो कहीं जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये लड़ाई वगैरह करते हैं। इरम उमर जात का हमारे पास दूसरा साल है। अब वो 1 ग्रीन की स्टूडेंट है हमारे पास और हमारी क्लास की जो प्रीफेक्ट हैं। स्टार्ट में जब वो हमारे पास आई थी तो वो इस कदर कॉन्फिडेंट नहीं थी और ना ही वो इतनी नीट आती थी और उनको इतना पता नहीं था कि मैंने नीट आना है या नहीं आना। बाज़ बच्चों के बटन नहीं लगे होते हैं, हम उनके बटन लगाते हैं, उनके दांत वगैरह साफ़ नहीं होते हैं। लेकिन स्टार्ट में जब वो आते हैं तो हम ये सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये है कि हम उनको बच्चों के स्टेज पे ले आते हैं कि बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और नीट एंड क्लीन आना शुरू हो जाते हैं। Children at TCF schools are also encouraged to indulge their creative instincts. Asghar Ali, who studies at a TCF school in suburban Karachi, loves making models from recycled materials. One of the models won him a national award for art. This labourer's son beat competition from children whose privileged lives are a far cry from his own. ये तकरीक अवार्ड मैंने इस्लामाबाद से जीता है। ट्रक बनाने के लिए गत्तों की चीज़ों से ये अवार्ड मुझे मिला था। पहली मर्तबा मैं कराची से बाहर गया हूँ और जहाज़ से प्लेन के ज़रिए से पहली मर्तबा बाहर गए अपने मामा के साथ। वहाँ से घूमा, फिर फैसल मस्जिद में गया, वहाँ पे अवार्ड लेने गया था। वहाँ बहुत लोग थे, उन लोगों ने ताड़ियाँ बजाए। इन बच्चों में अंदर एक हसरत है, एक कमी है, महरूमियाँ हैं। वो चीज़ें जब यहाँ इनको पूरी मिलती हैं तो वो उनको अपनी सलाहियतों को आगे बढ़ाते हैं। Kabir Ahmed, a graduate of the Yusuf Court TCF school, got an A grade in his metric exams. It earned him a place at Malir Cantonment College. Although he continues to help his father in his shop, Kabir can now set his sights higher. मैं पढ़ लिख कर पायलट बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं जहाज़ में पहले भी बैठा हूँ, मुझे जहाज़ में अच्छा लगता है और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी जहाज़ उड़ाऊँ, इसलिए मुझे बचपन से ही पायलट बनने का शौक़ है। The future of these children, the future, who can foretell the future? But what we like is that they must have an opportunity in the future. Just like our children who go to school and whose minds have opened up, we have to open doors in their minds as well. When we reach, inshallah, 1,000 schools, we want to see that some of these children will be our healers, some of these children will be our teachers, some will build dams or bridges for Pakistan, some will fly our planes, and we would be able to talk about these children as we talk about our own children.
As the sun sets on another day, and the last of the fishing boats are anchored, Rozina can dream of a future beyond Machar colony, and the new exciting world of opportunity that lies before her. अभी वो कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी, तो अल्लाह जाने, हम कोशिश करते हैं ना, अगर हो जाए तो उसका मुकद्दर है, जितना भी हमसे हो हम कोशिश करें।